uh, extremely important. Extremely important because I think without this aspect in life, it becomes very difficult to live. मैं अमूमन अपना जब करियर को पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि I had 2+ points in life, and I've lived a very happy and an easy life. And the reason was, the 2 points were, I joined army, and for army you had to be super fit. So, and if you're not super fit, you would always have some kind of trouble in life. So I was kind of super fit, right? हर चीज़ करता था, भाग लेता था, एथलेटिक था, बॉक्सिंग, जुडो, कराटे, सब कुछ. सो किसी चीज़ से घबराता नहीं था, स्टेमिना बहुत अच्छा था. तो एक तो मेरी वो स्ट्रेंथ थी कि मैंने ज़िंदगी अच्छी गुजारी, और अभी तक उसकी वजह से बीमारियां नहीं आई हैं, कुछ नहीं आया. तो ये काइंड ऑफ लाइफ इज़ गोइंग ऑन. And the second point was extremely important, and that was the communication skill. अगर आपकी communication skill अच्छी हो तो आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है. मैं आपको इसकी बहुत सारी मिसालें दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ के जो कॉलीग्स, मैं हर कोर्स में फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेता था, टॉप पोजीशंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह जितने भी कोर्सेज किए. और अमेरिका में भी बहुत अच्छे कोर्सेज किए, और उसके वजह ये थी गुड कम्युनिकेशन स्किल. जो मेरे साथ के जो द पीपल हु डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू गुड स्कूल्स, मैं जब उनके साथ कंपेयर करता हूँ तो दे वर काइंड ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल. यू नो, नॉर्मल इंटेलिजेंस सबकी बराबर होती है तकरीबन. इंटेलिजेंस में कोई कम या ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. तो जो मेरे साथ के कलीग्स एग्ज़ाम के लिए अगर वो 10 घंटे पढ़ते थे तो मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ के उसको कवर कर लिया करता था. और उसकी रीज़न थी गुड कम्युनिकेशन. इफ़ यू कैन एक्चुअली राइट वेल on the paper, then you don't have to be extremely elaborate about the subject. Your good writing itself fetches more marks than others. If you write legible, and if you write well, and you don't make any mistakes in, you know, grammatical mistakes or spelling mistakes, you definitely fetch better marks. जो पढ़ने वाला है उसका दिल खुश हो जाता है, यार कितना खूबसूरत लिखा है इसने. Now, don't blame the examiners. Examiners go for something that they can read. मैं भी आपको एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो उसके मैं आपको एग्ज़ाम के पेपर्स दिखाऊं तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिसमें मैं कभी पढ़ना ही नहीं पसंद करता. They are so badly written that I would not like to read. I would not like to read. जब आप एक चीज़ पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे तो उस बेचारे को आप क्या मार्क्स देंगे? वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट है, जितना मर्जी उसने उसके अंदर अच्छा लिखा है, but when the examiner is not happy about how he is writing, he would probably not extend help to the person. So उस टेक्निक को बहुत लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते हैं. खुशबू लगा देते हैं पेपर. खुशबू नहीं लगानी, खाली अच्छा लिखना है, लेजिबल लिखना है, और आपने ऐसा लिखना है कि जो एग्जामिनर पढ़ के उसको, तो आपको बहुत आसानी से. लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड ये है कि यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट वेल. नाउ व्हाट इज बेसिकली दिस? ये क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग क्या है राइटिंग वेल की? सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि आप लिखते कैसे हैं या आप बोलते कैसे. ठीक, आज जो चीज़ें अभी आज पढ़ाने जा रहा हूँ जी, आपको ज़िंदगी में शायद हाँ कोई किसी ने बताई नहीं होगी और शायद बताएगा भी नहीं.
लेकिन ये सुनने के बाद आपको कम से कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको लिखाती है, लिखते कैसे हैं आप, ठीक है, या बोलते कैसे। बचपन में आपने एक चीज़ क्लासेस में एक एक्सरसाइज की होगी। दैट एक्सरसाइज यूज्ड टू बी टीचर्स वुड गिव यू वर्ड्स एंड यू वुड राइट सेंटेंसेस अबाउट द वर्ड्स, राइट। ये सीखने की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीका यही है। सीखने का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीका है वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करो। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ सीखने वाली नहीं है। जब आप ये सीख जाते हैं हाउ टू यूज़ द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, यू एक्चुअली लर्न एवरीथिंग अबाउट लाइफ। जब आप ये सीख जाते हैं, ओके। व्हाट्स द डिफरेंस between an animal। उस दिन भी बात हो रही थी कि एक और फ़र्क भी इंसानों में और जानवरों में है। वो फ़र्क जो मैंने पहले कहे थे और उसके अलावा एक और फ़र्क भी है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी वोकल कॉर्ड्स वर्क एंड दोज वोकल कॉर्ड्स कैन बी ट्रेन्ड टू अटर different phonetic effects, but they have some issues। मैं like तोता बहुत सारी चीज़ें कह लेता है, उसके vocal cords इस तरह की होती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो आप कह लेते हैं वो बहुत सारी चीज़ें कह लेता है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं उसे किसी ह्यूमन बीइंग से, तो एक ह्यूमन बीइंग की vocal cords बहुत ज़्यादा elaborate होती है और उस वोकल कॉर्ड के पीछे एक और चीज़ होती है। उस वोकल कॉर्ड के पीछे एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं vocabulary, the words that you remember, आपकी मेमोरी का हिस्सा। ठीक, जो बातें बताने भी जा रहा हूं बच्चों को ज़रूर बताइएगा, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को और बच्चों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बातें आपसे लोग नहीं करेंगे। आपके लिए ये समझनी कि आप किस प्रोसेस में से गुजरे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी क्लास की टीचर्स हमें टंग ट्विस्टर्स सिखाया करती थी। आई डोंट नो आप लोगों को इस ज़माने में सिखाती, हम बूढ़े पुराने ज़माने के लोग हैं तो हमें सिखाया करती थी। आजकल सिखाती टंग ट्विस्टर सिखाते नहीं? कोई टंग ट्विस्टर आता है आपको? आपको याद भी नहीं? मेरे बच्चे को याद है। आपको? लड़कियां अमूमन बहुत, उनकी ज़ुबान बहुत अच्छी होती है तो वो टंग ट्विस्टर ज़्यादा आसानी से बोलती। आपके बच्चे याद है टंग ट्विस्टर कोई? हैं? अब नहीं याद, भूल गए। आपको कोई याद है? ये मेरा बच्चा याद है। मेरे साहब, यू रिमेंबर समटाइम? हाँ? She sells seashells on the seashore, but the seashells she sells are not the seashells, right? ऐसे ही है ना? और सुनाएंगे, और कोई बताएं? I still remember so many of the tongue twisters. Bitty bitty bought a bit of butter, but the bit of butter was a bit bitter. So bitty bitty bought another bit of butter, and that bit of butter was a bit better than that bit of butter. Bitty Batty bought a bit of butter, but the bit of butter was a bit bitter. So Bitty Betty bought another bit of butter, and that bit of butter was a bit better than that bit of butter. बचपन में स्कूल में केजी में टीचर्स ने सिखाया था, कोई वजह थी उसकी सिखाने। और सुनाए कोई? Anybody else who remembers? चलें उर्दू में सुनाता। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़क सिंह की खिड़कियां, खड़क सिंह की खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसे ही और Once a fellow met a fellow in the fields of bean, asked the fellow to the fellow, if the fellow can the fellow tell the fellow what the fellow means। ये बेटा कोई रीज़न था इस सब के पीछे टीचर्स का सिखाने का। There was a method of actually improving the phonetic skills of the kids। और अब अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा तो कोई गलत काम किया जा रहा है। मैं तो पता नहीं कितने अरसे तक खाली लफ्ज़ों के जुमले बनाता रहा हूँ।
और ख़ाली अगर लफ्ज़ों के जुमले बनाने समझ आ जाएं तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अभी बात करेंगे कि वो लफ्ज़ों के जुमले कैसे बनते हैं और how do people get trained to think to make sentences. It's about thinking how to make sentences. We'll talk about. हम communication skill पे बात कर रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि communications की आपको ये पता हो कि how do people speak. People speak through mouth and they utter sentences. Right? Life is about uttering. मैं हर वक्त sentence बोलता हूँ. When I stop, I finish a sentence. When I give a gap, I add a comma. Right? ये है ना, ग्रामर तो टोटल इतनी है ना कि जब मैं बोलूँ तो मैं किसी जगह पे थोड़ा वक्फा दूँ और किसी जगह पे ज़्यादा वक्फा दूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैंने सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म किया है और उस सेंटेंस के कितने हिस्से। सही हो गया? और बाकी जितनी पंक्चुएशंस हैं आप वो देते हैं कि अपना लहजा बयान करने। आप क्लास में क्यों नहीं आए? क्वेश्चन मार्क, वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो English gets translated, or languages get translated into how you want to look when you are uttering sentences, right? इसके पीछे background, your mouth utters sentences, but there is a brain out there which helps this mouth utter these sentences. This brain has got certain parts which plays in. There's a brain over here, part of brain, which actually generates an idea. Right? Now, the idea is that you want to tell a friend of yours that you are so glamorous, right? Or you're so beautiful, right? Or something else. आप ये utter करना चाहते हैं, idea ये। अब उस idea को utter करने के लिए you have to formulate sentence, develop a sentence. So this idea goes into a processor in the brain, which jiggles the sentence. Now, in jiggling the sentence, your memory has got vocabulary. So, idea gets the words from the vocabulary, puts it into the processor, right? And then this processor starts generating pages or sentences. Now what happens is that your mechanics of speaking takes more time than the mechanics of thinking. Your thinking is in the order of hertz, so many hertz, right? Thousands of hertz. And hertz means in a second. You can make or develop literally hundreds of sentences in a second. But you can't utter those sentences in a second. Right? When I'm talking, actually something in my brain is developing those sentences already. My brain has already developed those sentences that I'm uttering. Right? So the sequence of utterance goes into the brain, and it goes in something called buffer. In this buffer, the sequence of uttering the sentences goes in. All of these sentences go and sit in this buffer because idea is already there that I have to explain. For example, you are writing
are you thinking, or have you have to talk about a cricket match. Now in cricket match, everything is in your brain. You've already formulated the whole picture of the cricket match, right? That picture is formulated over here. This picture is always a rich picture. So many of these ideas about the cricket match are already there in your brain in some kind of a format, right? And that's at a place where you are generating your ideas. For completing every sentence, you go and borrow words from the vocabulary. Borrow the word, put it in a sentence. You put it in a sentence, let it go through a processor. The processor works on it, puts the grammar right and the sequence right. Then it throws it into a buffer. The buffer stores the sentences. This is the first sentence, this is the second sentence, this is the third sentence, this is the fourth sentence. You have to utter. Now you can't utter these sentences in a go. So therefore these sentences have to sit in a buffer. They are already there, but they just go and sit. Now what I am speaking is, I've already formulated all these sentences in my brain. The idea was to explain this method of speaking. My brain has already formulated the whole idea. The brain has picked up the words from the vocabulary, processed the sentences, put those sentences in a buffer, and just waiting for me to keep uttering those sentences. This is exactly what's happening right now. I'm uttering in a sequence, but all of these things have already been formulated in your brain. You don't have a picture of either this place or this place. You don't have a picture, but your brain has a picture of what are you going to do. So before you actually utter a sentence, it's already ready-made over there, sitting there in the buffer for you to utter, right? And you keep uttering these sentences. Now the logic of it, how to make the sentences, where to get the words, how many words you have in your vocabulary, is all what makes you utter a very good speech. You talk about people who say, this guy is an orator. You say that? Like you talk about Obama, you say, wow. Martin Luther King, you say, wow, what an orator. You say that all the time. So what's happening is that these are people who they're very clear-headed people. That means they've already formulated all the ideas that they have to talk about. They have a very beautiful vocabulary. And their logic system works well. एक चीज़ आपने बहुत दफ़ा पहले सुनी होगी, पहले तोलो फिर बोलो. ये कहाँ पे होता है? ये इस प्रोसेसर का काम है कि जो उसने सेंटेंस फॉर्मुलेट किया है, उस सेंटेंस के अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं रह गया. ये फ्लॉ कैसे चेक होता है? What you've learned as a kid, कि सेंटेंस कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है. सारी लॉजिक्स इस प्रोसेसर के अंदर. ये वर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते तुम, ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा. यार इसके तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ये नहीं तुम कह सकते. All this is in this processor. जब आप सेंटेंसेस से बना के इसको देते हैं प्रोसेसर, तो ये फाइनलाइज करता है कि हाँ ये अटर हो सकता है और ये नहीं हो सकता. फिर वो सीक्वेंस के अंदर, इस बफर के अंदर जाने देता है उसको. और वो जब वो इसमें आ जाता है, तो then your job is only to pick up a sentence and keep speaking. Pick up a sentence, keep speaking. Now, having learned how do you actually speak, what's your share of work in this? What do you have to do? How do you become an orator? Two methods of becoming an orator. One method is enhance your memory of sentences. How do you enhance your memory of a sentence? Your memory is about what have you learned in the past. ठीक है? Whatever you learned in the past, you've heard in the past, you've seen in the past, is your memory. Whatever sentence that you've heard in the past has gone into your memory. The memory keeps the sentence also intact and keeps the words also intact at a different place.
So your memory can actually help you throw a complete sentence into a processor or just throw few words so that your processor develops a new sentence. How have you learned this? When you were a kid. When people were telling you, take this word, develop a sentence. This is where you learned or you trained this processor to develop sentences. So the most beautiful part of your learning was making sentences out of the words which were given. Right? So, whenever somebody utters a sentence, it goes into your memory. आपको पता नहीं होता उसने sentence utter किया, वो आपकी memory में जा चुका होता है. ठीक है? आपको याद नहीं है, आपकी memory को याद है. From the face of it, you don't know that this sentence was earlier uttered by somebody in a speech or on a TV, on a drama or whatever. But your brain remembers that. So whenever the idea is to talk about that thing, your memory actually throws in that sentence in front of you to your processor. And you either know it or you don't remember that this sentence was uttered by somebody else. It just picks up that sentence, processes this sentence for the situation which is prevailing, throws that sentence into your buffer. And you start speaking. तो फिर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि you must have developed a very good vocabulary. लफ्ज़ को याद करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. जब भी कोई वर्ड सामने आए तो you must remember that word. फ़ौरन उसे याद कर लेना इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए. अब आप बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो उससे गुजर चुके हैं और ख्वाहिश भी नहीं. बहुत सारे लोगों की आप में से ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं क्यों सीखूं यार, मेरा दिमाग खराब है सर, आप मुझे भी आप बच्चा बना रहे हैं, सेंटेंसेस में जुमले बनाऊं. इसलिए बना रहा हूं कि बचपन में आपने नहीं सीखा और अब आपके क्योंकि बच्चे माशाल्लाह जवान होने जा रहे हैं तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों को तो कम से कम सिखाइए, उनको बेइंतहा ज़्यादा जुमले बनाने की तरगीब दीजिए. और जो बच्चा अच्छा जुमला बना ले आप उसको ज़रूर शाबाश दीजिए कि आपने बहुत अच्छा जुमला. और अपने हवाले से और बहुत सारे तरीके बहुत सारे. फॉर एग्जांपल मैंने टेक अ रजिस्टर और उसके ऊपर लिख लीजिए लैंग्वेज रजिस्टर. जब भी कोई अच्छा सेंटेंस, इडियम, मुहावरा, कोई चीज़ भी नज़र आए तो उसमें लिख लीजिए और उसको हफ्ते 1-2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर नज़र से गुजार दीजिए. जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा और फिर आप फ़ायदा तब होगा जब आप उन सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू करें. ठीक? तो अच्छी कम्युनिकेशन का तरीका ये है कि सबसे पहली बात, you must have a lot of vocabulary, and the second thing is you must have enough of capability to develop a good sentence out of your vocabulary and your process. बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई. लहजा, उसमें लहजा, ये जो टेलीफोन के ऊपर ये बहुत सारे आइकॉन्स आते हैं और ये स्माइलीज और ये वो सब आती हैं, देखिए ना आपने. क्यों? क्योंकि लफ्ज़ों में लहजा नहीं होता और लहजा इंतहाई इम्पोर्टेंट. बयान में अपना मतलब समझाने में इंतहाई इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है लहजा. What are you doing? What are you doing? What are you doing? All of these things have got different meaning. They have different connotations. Exactly the same words said in a different tone would convey a different meaning. ठीक? तो लहजे के लिए punctuations भी सीखिए. ठीक हो गया? और अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालें जहां उन्हें लैंग्वेज सिखाई जाए. ऐसे स्कूलों में नहीं डालें जिनका नाम मशहूर हो, बीकन हाउस एंड सिटी हो, ये हो. इसकी ज़रूरत नहीं है.
बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के बीकन हाउस और उनके स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो उर्दू में ए स्टार लेते हैं, और हराम है जो एक लफ्ज़ उर्दू का उन्हें आता हो, कुछ नहीं आता। ए स्टार इंग्लिश में भी यही यार, इंग्लिश आती नहीं है लेकिन ए स्टार है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे ओरिएंटेशन ग्रेड लेने की है, ओरिएंटेशन सीखने की नहीं। हम जब स्कूल जाया करते थे तो हमारे स्पेशली जो इंग्लिश के टीचर थे वही तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश, एंड ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश आफ्टर द स्कूल। स्कूल का क्लास ख़त्म हो जाती थी रोज। फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास में हमने सारे ये जो डेविड कॉपरफील्ड और ये ट्रायर आइलैंड और ये सब नावल हमने 8th क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे थे और 8th क्लास में हम अंग्रेज़ी के मशहूर चार्ल्स डिकन के नावल शावल सारे पढ़ चुके थे जो बच्चे पढ़ते। ठीक, तो ये क्या था, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में वो पढ़ाया करते थे और ट्यूशन फ़ी नहीं लिया करते थे, बिकॉज दे वांटेड अस टू लर्न। सिनोनिम्स पढ़ाया करते थे तो क्लास में जो ग्रामर की किताब में सिनोनिम्स लिखे वो नहीं, वो ढूंढ के लाया करते थे सिनोनिम्स, और फिर उन सिनोनिम्स की कॉनोटेशन बताया करते थे। ये वर्ड इस जगह पे यूज हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। एक ही वर्ड के सिनोनिम्स मुख्तलिफ जगहों पे यूज हो सकते हैं और कैसे यूज करना है उनको। तो टीचर्स ऐसे ढूंढे जो बच्चों को पढ़ाएं, और जहां इंग्लिश इतनी टॉप ऑफ द लाइन पढ़ाते थे, उर्दू उससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाते थे। मैं 8th क्लास में जो उर्दू लिखता था वो शायद मैं बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स को देखता हूं वो नहीं लिख सकते। 8th क्लास की उर्दू, गजलें और नज़में मैं 8th क्लास में लिखा करता था और गजब की लिखता था 8th क्लास में। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ करते हैं। 8th क्लास की जब क्लास शुरू हुई